Hello, dear students. I am very glad that you are responding my teaching. Right? Today we will discuss inverse of a function. Okay? Or we say inverse function. Right? You should not understand inverse function is a one type of function. Okay? You know the meaning of a word is determined in a context according to context. Okay? Come to example 1. You see set A, set B and function f1 from A to B. Okay. f1 is equal to 2, 6, 4, 12, 6, 18, 7, 21. f1 inverse is equal to 6, 2, 12, 4. Okay. 18, 6, 21, 7. Right. f1 inverse is not a function because for a function, for every element of first set, okay, first set, there is one and only one element in second set, right? Here you see for 22 there is no image, okay. That is why f1 inverse is not a function. Then come to example 2. You see, okay, here set A, set B, okay, f2 function I have taken. You see, f2 is equal to 1, 4, 3, 12, 7, 18, 10, 14, right? f2 inverse is equal to, okay, 4, 1, 12, 3, 28, 7, 40, 10, right? Here f2 inverse is a function according to definition of function, okay. So f2 from A to B, f2 inverse from B to A. Here inverse of function f2 exists. We say in a language f2 inverse exists. Here f1 inverse does not exist. You should understand this. Okay. And another thing is, if a function is bijective, okay, bijective, then inverse of a function, okay, this is synonymous, is a function, okay. Under this condition, inverse function exists. That means inverse function is a function, okay. So that in that case, that function is said to be invertible, okay. Which function? That function, okay, is said to be invertible, right? Now come to another problem for knowing the inverse of a function clearly, okay. Now I am showing a problem for clear understanding, right? Okay, you see problem 1. Let function f from R to R be defined by fx is equal to 2x plus 1 so that f is bijective. Find f inverse and f inverse of 2. Okay, all right. Now focus on solution. Okay, you see, for bijective means surjective as well as injective, right? For surjective, first we will show, right? Function from x to y is called as surjective if every element of y has the pre-image in x, right? Okay. For injective, you see, function from x to y, x1 is not equal to x2, which implies fx1 is not equal to fx2. Okay.
This is the condition for injective, right? Come to surjective first. You see, understand, if every element of y, okay, has the pre-image in x, right? That means taking any element of y, if you can show that there is a pre-image in x, right? Then the function is called surjective, right? Okay. I have shown in pictorial form. You see, R actually cannot be shown in like this figure, but your clear understanding, I have drawn this figure, right? 1 2 3, 1 by 4, 2.5, like this. Here also, and I have written faster. You see, for your understanding only. Here is second R, okay. Y is equal to fx is equal to 2x plus 1, okay. You see, so 2x plus 1 is 2x plus 1 is equal to y, okay. So 2x is equal to y minus 1, which implies x is equal to y minus 1 by 2. That means x is a function of, okay, x is a function of, you see, x is expressed in the form of y, right? That means y can be written like this: x is equal to gxa, gy, sorry, x is equal to gy is equal to y minus 1 by 2. Let's say gy, okay. In place of a gy, we can write f inverse y. You should understand this point, okay. F inverse y. You can write f inverse y in place of gy, capital G, right? Okay. So now we get f inverse y is equal to y minus 1 by 2. Okay. Come to point. Okay. You see, now we will show, for you see, in second R, there is a element in R. I have taken, let's say, y0 belongs to R. Okay. y0 belongs to R. In which R? In second R. Here you should understand. Okay. Then y0 minus 1 belongs to R. Obviously it is true. Okay. A real number minus 1 belongs to real number set. Okay. So which implies y0 minus 1 divided by 2 belongs to R. Okay. In real number set. Okay. Here you see, here this is first R, okay, right? Here first R you see, okay, y0 minus 1 by 2 belongs to R, okay. y0, I have taken y0 in this set, and I will have to show that there is a there is a pre-image of y0 in this set, right? Okay. You see, so y0 minus 1 by 2 belongs to R. Okay. R is a, you see, R is a real number. Okay. So you can show for every element of in R. In which R? In second R. There is a pre-image. Okay. There is a pre-image in first R. Okay. So F is surjective. F is surjective. In genuine, you can write also like this. Let y belongs to R, then y minus 1 belongs to R, which implies y minus 1 by 2 belongs to R. You can write also. But for your clear understanding, I have taken y0. Okay. So that you can understand clearly. Okay. This is surjective. And you see, here is also x1 is not equal to x2, 2x1 multiplying 2, 2x1 is not equal to 2x2, 2x1 plus 1 is not equal to 2x2 plus 1, which implies fx1 is not equal to fx2, so f is 1 to 1.
right? So F is 1 to 1, F is surjective. Okay, that means F is bijective. Combined, we can say F is bijective. Now, you see, we get F inverse, you see, here this expression, okay, F of inverse F of 2, you see, putting 2, right? So 2 minus 1 by 2 is equal to 1 minus 1 by 2, right? Okay, another thing you should understand, you can write this expression F inverse of x, you see, right, is equal to x minus 1 by 2. Why? The change of name of variable is valueless. You should understand here. Change of name of variable, okay, is valueless. There is no effect, okay, in relation, okay. So you can write this also, F inverse of x is equal to x minus 1 by 2. Perhaps you have understood. If you are feeling any doubt, convey me in a comment box. I can give, I surely I shall give answer. Okay. देखो पिलामाने, now I am explaining in odia. Okay. Inverse of a function. देखो function रो कौन inverse function पे हमें कहूचे है ना. तुम केबे बुझिबनी जे inverse function गोटे टाइप रो function. गोटे शब्दर अर्थ केमती बाहर करछे आमे कॉन्टेक्स्ट को देखिकी बाहर करछे हैला. तेणु के कॉन्टेक्स्ट रे शब्दटा यूज हेछि सेटा देखिबा दरकार. एग्जांपल 1 नेछि देखो f1 नेछि फंक्शनटा नेछि a रु b को हैला. f1 टा ए भली आसीबो है कि देखो f1 इनवर्स टा बाहर कली केते हो उल्टी जीवो 6 2 12 4 18 6 21 7. f1 इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन, एटी फंक्शन होबनी कहीं 22 टा बाद पड़ी होची है कि. तेणु f1 इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन. एटा कौन ताले एटा गोटे रिलेशन हबो है कि. एटी देखो एग्जांपल 2 रे देखो a रु b को नीची f2 गोटे फंक्शन नीची f2 इनवर्स टा केते हबो 4 1 12 3 28 7 14 10 है ना. f2 इनवर्स एटा गोटे कौन हबो फंक्शन हबो है ना. फंक्शन डेफिनेशन अनुसार ताले एठी इनवर्सटा फंक्शन नुहे, एटा गोटे फंक्शन. एटी आमे कोन कहिबा ना इनवर्स ऑफ द फंक्शन डज नॉट एक्जिस्ट हैला कि एक्जिस्ट करू नाही. एठी कोन करिबा ना एक्जिस्ट करछु बोली कहिबा हैला. आ गोटे इंपोर्टेंट कथा होची जदि गोटे फंक्शनटा बाइजेक्टिव होइताय तेबे तार इनवर्स फंक्शनटा गोटे फंक्शन हबो हैला. बाइजेक्टिव माने तुम जानथिबो कोन इंजेक्टिव एवं सर्जेक्टिव. एवं सेई केस रे फंक्शन को कोन कहिबा इनवर्टिबल. कोन कहिबा इनवर्टिबल. वर्तमान आमे देखिबा जे गोटे प्रॉब्लम करिबा इनवर्स ऑफ फंक्शन केमती बाहर करिबा एवं ताको समाधान करिबा हैला. पिला माने एबे गोटे प्रॉब्लम को आस देखो. फंक्शन ता मन नीचे r बार कौन बी डिफाइंड बाय fx टा केते नीचे 2x + 1. आमे देखिबा कौन f टा बाइजेक्टिव देखिबा f इनवर्स बाहर करिबा एवं f इनवर्स ऑफ 2 बाहर करिबा. केमती बाहर करिबा सर्जेक्टिव देखिबा इंजेक्टिव देखिबा. सर्जेक्टिव डेफिनेशन कौन इटा ना y रो प्रत्येक उपादान पई कौन गोटे उपादान रो गोटे प्री इमेज थिबो केटी x रे थिबो होला. बुझिले कि इंजेक्टिव पई कौन इटा होचो तुमर कंडीशन हैला. तले बर्तमान देखिबा केमती देखिबा देखो. अगर मुझे इंजेक्टिव देखे दूसरी देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 दुईटा गुणी दबा केमती हम एति हम है ऑब्वियसली इट इज ट्रू 1 मिसेबा एमती हो पार. तेणु fx1 टा कौन हम fx2 सहित सामान नुहे. तेणु f इज f टा कौन हम 1 to 1. सब्जेक्टिव देखो केमती देखो हम कौन एव्री एलिमेंट ऑफ y रो गोटे नहीं के y रे देखो ये देखो सेकेंड आर नेली मुझे को फास्ट आर नेली है y टा fx इज इक्वल टू 2x + 1. देखो 2x टा बाहर कली केते होबो y - 1 है. x टा केते होबो y - 1 by 2 होबो. x टा को एटा केमती लिखिबिरा एटा gy गोटे काहे कि ना y देखो x टा y आकार प्रकाश कराई छि त gy लिखि परिबा हैला. मु लिखि नाही से gy टा को हम केमती लिखि परिबा ना f इनवर्स y लिखि परिबा हैला. दैट इज इक्वल टू y - y 1 by 2. एटा मु लेखु नै gy टा तुमर बुझिबा पई मु केवल कहूछि
है कि बुझे तो बर्तमान देखा केमती टेस्ट करवा देख आम ये गोटे उपादान ना और तार प्रीइमेज आर रे अच्छी कि नहीं देखा जदि आर रे रहा ठीक जदि न रहा ताले कौन हो पार ना सब्जेक्टिव हो पार ना देख नेली y0 नेली है आर रे गोटे उपादान y0 नेली नहीं कि कौन कली ना y0 माइनस 1 टा कौन हम आर रे निहाती रही दुई द्वारा विभाज्य कले बर्तमान भाग कले सी आर रे है सूत्र अनुसार केटे फास्ट आर रे तेणु y0 टा नेली एवं y0 माइनस 1/2 ये एपटर जेटा तार प्रीइमेजटा जेटा कि यही आर रे रोचे बुझे कि बाहर को जाऊनी यही आर रे ही रोचे तेणु एपटा कौन कह सब्जेक्टिव कह तेणु सब्जेक्टिव है यहाँ कौन है 1 to 1 है तेणु कौन फंक्शनटा कौन है बाइजेक्टिव है तेणु बाइजेक्टिव होता कारण इनभर्स बाहर करमी बाहर करवा ये तो मुझे देखी दीजिए इनभर्स केमती बाहर कराए बर्तमान ये 2 पकईदे है 2टा पकईदे के 2 - 1/2 समान 1/2 है ना जदि किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स लिखिपर ओके बाय।